Now, dear student, what are different types of polymers? Now, as we all know that polymers are made up of by connecting the several monomer unit or monomer molecules. Now, the process of making polymer by taking the different monomer units is called polymerization. Means, what is polymerization? Means, how can you define? Simply you have to write the process of making polymer by using the monomer units is called polymerizations. Now, here are different polymers which are made after polymerizations. Number A, Homo Polymers. Now, Homo Polymers are those polymers which are made up of by repeating the same or taking the same monomer units. If you make the polymer by taking the similar or the same kind of monomer units, then that polymer is said to be Homo Polymers. And here are some examples: polythenes, polypropylene, polyvinyl chloride, Teflon, etc. So, these are such a polymers which are made up of by taking the same monomer units. मतलब ये ऐसा पॉलीमर है जो एक ही टाइप का मोनोमर यूनिट्स को यूज करके बनाया गया है. Now here next you may see copolymers. Now copolymers are simply the polymers obtained from two or more different monomer units. Means when you take two or more than two different monomer units and polymers are produced, then these polymers are said to be copolymers. Okay, examples are here: nylon, bakelite, melamine, polyesters, etc. Means from here you have to understand homopolymer means they are made up of taking the same or similar monomer units, but while making the copolymers you have to take two or more than two different kinds of monomer units. Means you have to take the varieties of monomer units, then that will give up you the means we can manufacture the copolymers. Now copolymerization means it is the process of taking the monomers often leads to the formation of the polymers which have quite different properties than those of the corresponding homopolymers. I told you earlier, copolymer means such a polymer which are formed or manufactured by taking two or more than two different monomer units. Now when you take two different monomer units and when you make the copolymers, then these may have different properties than the corresponding homopolymers taken, right? Now next topic is characteristics of the synthetic fiber. Why synthetic fibers are generally preferred over natural fiber? मतलब नेचुरल फाइबर की जगह अक्सर इन दिनों सिंथेटिक फाइबर्स का अधिकतर ज़्यादा यूज हो रहा है. Why? What is the reason behind for excessive use of synthetic fibers in our daily life? Means why synthetic fibers and the man-made fibers are popular and famous in this day? Means you have to remember the some characteristics. कुछ खासियत है इनमें जिसके वजह से ये काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी फेमस है. नंबर वन, strong and reliable. Means the durability of the synthetic fiber clothes are maximum. मतलब काफ़ी ज़्यादा टिकाऊदार है, ड्यूरेबल है एंड रिलायबल. मीन्स यू कैन रिलाई ऑन दैट. मतलब हम लोग उसको खरीद करके यूज कर सकते हैं एंड इट विल लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन द नेचुरल फाइबर. नंबर बी, moths and insects resistant. मतलब synthetic fibers are not attacked by insect or any other moths, because we know that natural fibers
like wool and cotton can be easily attacked by the different moths and different insects. So here you can understand synthetic fibers are moths and insect resistance. Now number C, wrinkle resistance. Now what is mean of wrinkle? Wrinkle means synthetic fibers always maintain its crease. मतलब एक बार हम लोग आयरन कर दिए उस कपड़ा को, यदि सिंथेटिक फाइबर है तो उसका क्रीज बार बार नहीं बिगड़ता है जितना नेचुरल फाइबर का अक्सर बिगड़ जाता है। जैसे कॉटन का कपड़ा सवेरे आयरन किया, एक बार यूज किया, उसका आयरन खत्म हो जाता है, मीन्स उसमें रिंकल्स आ जाता है, बहुत सारा आपका रिंकल्स यू कैन सी लॉट्स ऑफ लाइनिंग्स हियर एंड देयर, राइट। सो सिंथेटिक फाइबर इज रिंकल रेजिस्टेंट, व्हिच मीन्स उसमें बार बार आयरनिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट डी नंबर, ड्राइज अप क्विकली। गौर किया होगा, देखा भी होगा, मीन्स व्हेन यू टेक द सिंथेटिक फाइबर क्लोथ्स because it absorbs the less water, मतलब वाटर एब्जॉर्बिंग जो कैपेसिटी होता है सिंथेटिक का बहुत लिस्ट होता है इन कंपैरिजन टू द नेचुरल, और ये बहुत जल्दी सूख जाता है इन कंपैरिजन टू द नेचुरल वन, राइट। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, चीपर देन द नेचुरल फाइबर, मीन्स नेचुरल फाइबर क्लोथ्स आर अ बिट एक्सपेंसिव बट synthetic fiber clothes or materials are very cheaper and we can easily afford them, मतलब हम लोग इसको आसानी से खरीद सकते हैं कम दाम में। सो ज्यादा से ज्यादा आदमी प्रीफर करता है सिंथेटिक फाइबर्स। जो कपड़ा मानो कि आपका यदि नेचुरल से बना है 3000-4000 कस्ट पड़ रहा है, तो उसी जगह यदि आपको 300-400 चाहे हार्डली 500 मिल रहा है, तो डेफिनेटली पर्सन्स ऑफ द पीपल चूज दैट लेस एक्सपेंसिव वन, मीन्स सिंथेटिक फाइबर ज्यादा पसंद करता है, चूज करता है, ठीक है। सो इट इज चीपर देन द नेचुरल फाइबर। नेक्स्ट, लेस मेंटेनेंस केयर। आई टोल्ड यू अर्लियर, इसमें आपका नैप्थलीन बॉल्स, मे बी सम काइंड ऑफ द प्रोटेक्टिव केमिकल्स यू शुड नॉट रिक्वायर व्हाइल स्टोरिंग। मतलब जैसे हम लोग नेचुरल का, जैसे आपका जो वूलन कपड़ा हो गया, वूलन स्वेटर हो गया, उसको मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग सिल्वर फेस को अवॉइड करने के लिए, चाहे मॉथ्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग वहां पे नैप्थलीन बल्ब्स रखते हैं, मगर इसमें रखने की कोई जरूरत, मीन्स इसका जो मेंटेनेंस केयर होता है बहुत लेस होता है सिंथेटिक फाइबर का। सो सिंथेटिक फाइबर इज वेरी पॉपुलर और द फेमस इन दिस डे, कैन बी डाइड इन एनी कलर्स, मतलब हम लोग अपने पसंदीदा कलर में इसको डाई भी कर सकते हैं, और परमानेंटली, मतलब एक बार डाई करने से वो रंग आपका निकलता नहीं है। कि जैसे हम लोग गौर किए होंगे, देखे होंगे, नेचुरल जो फाइबर्स हैं उसमें डाई करने के बाद व्हेन यू वॉश फॉर द फर्स्ट टाइम, देन इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ कलर, मतलब वो कलर धीरे धीरे छोड़ जाता है, और आफ्टर मेनी यूजेस, मतलब एक लॉन्ग यूज होने के बाद धीरे धीरे वो फिक्का हो जाता है, मीन्स उसका कलर फेंट होते चला जाता है, डीम होते चला जाता है। मतलब ब्राइटनेस ऑफ कलर सिंथेटिक फाइबर का क्लोथ आपका बरकरार रखते हैं बहुत दिनों तक, मतलब वो परमानेंटली डाई हो जाता है, मीन्स इट डज नॉट लीक एनी कलर्स एंड यू कैन डाई एज एनी कलर्स एज वी विश, बट नेचुरल में ऐसा नहीं होता है। सो बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स सिंथेटिक फाइबर्स आर जनरली preferred over natural fiber. So dear student, up to this topic I think you have been well clear.